So, hello and hi everyone, welcome back to my channel, and I would like to say hello and hi to Bamshankar Upadhyay. Thank you so much sir for joining in. This is a session on civics, and this is ICSE curriculum that we are following, and this is civics class 9 and presented by Simran Priya, that's me, right? Moving on, what is the chapter's name? The chapter is Civics Chapter 1 Part A, and the book is, as you know, this is the Total History and Civics book, the Morning Star publication. Kiss publication ka book we are discussing? We are discussing Morning Star's publication, the Total History and Civics book. Okay, now I would like to say hello to Janvi Singh. Thank you so much for watching in. This is a chapter on our constitution, the very first part, the very first chapter. Okay, now let's dig in and let's understand that what is the table of content, that what are the things that we are going to discuss in this chapter. We are going to discuss the introduction of this chapter. Then we will move forward and we will discuss the enactment of the Indian Constitution, how the Indian Constitution was came into being and how it was enacted on. Now moving ahead, फिर हम करेंगे formation of the Constituent Assembly. Now formation of the Constituent Assembly को ये काम दिया गया था that they will draft the Constitution. So how they formed the Constituent Assembly and when it was formed. Now comes the composition of the Constituent Assembly, how this Constituent Assembly was composed on, and what is a objective resolution. हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि objective resolution क्या होता है, what do we mean by objective resolution, and the last topic is the drafting committee. What was the drafting committee? Okay, that's the content of our today's session. So before beginning our session, let me introduce myself first. That is, my name is Simran Priya and I have done my graduation and my masters from Delhi University. Currently I am teaching in an ICSE school known as Carmel School, and that's all I have been teaching from last 4 years, and that's all for me. Now moving ahead, let's start with the introduction to our constitution. अपने our constitution, Indian constitution के introduction से शुरू करते हैं. Understood? Now, are you guys excited? Thank you so much, Shrishti Raj. Good afternoon. Very good afternoon. Thank you so much for visiting in Iti. Good afternoon, bacha. Everyone, thank you so much. Call all your friends. Call all your friends because this chapter is going to be very, very important. And as you know, we are stuck in a pandemic during this COVID time. We do not have access to our classroom. We are not getting that education that we want and we have a right to get, right? So ये है आपका नया बदलाव जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, नई क्रांति, and it is a very, very important chapter with some technical understanding. So make sure that every student come in and join the session. Good afternoon, Supramani Datta. Thank you so much, bacha, for joining in. Good afternoon, Janvi Singh, Shreya Singh. Really excited. I am also really excited, bacha. Let's begin with our chapter. Let's begin with the introduction to this chapter. Okay. Now, the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. When did the Constitution of India was came into effect? That means was लागू किस दिन से हुआ था? When it came into being and it was enforced on the people. So the enforcement of the Constitution was on 26th January 1950 May. Okay, now when India became a sovereign democratic republic, what do we mean by sovereign? Sovereign मतलब independent. Sovereign मतलब क्या होता है बच्चा? Independent होता है. Sovereign मतलब independent, that is, it is under no one's control, no control of outside or
और इनसाइड पीपल। कोई भी इस पे कंट्रोल नहीं है। इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गया है, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इट इज गवर्न्ड बाय द पीपल। कौन इसे रूल कर रहा है? इट इज गवर्न्ड बाय द पीपल। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा आप जान लीजिए अपने संविधान के बारे में कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्न्ड by the people. Okay, now second is democratic. What do we mean by democratic? Democratic means we here people were the one who were choosing their representative. People अपने representative को चुनते हैं and that sits on the seat of the government और वो हमारी government है that work for us. So we have democracy, we have the right to vote, so we choose our representative. And what do we mean by republic? That is a country where the people has the power is known as republic. एक वैसी कंट्री जहां पर किसके पास पावर है बच्चा? जहां पर पीपल के पास पावर है, that is known as republic. Okay, so a country that has an elected government and has an elected leader, सारी चीजें elect की जा रही हैं, so that is republic. So you have understood कि हमारा constitution सबसे पहले लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये मत बोल देना 26 जनवरी 1947 में, नहीं बच्चा। आजादी के बाद हमने बैठ के अपना संविधान लिखा और हमने जब अपना संविधान पूरा कर लिया तो उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। अंडरस्टूड? और इस दिन इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अंडरस्टूड? ओके, नाउ if it comes democracy all about the right to vote? No, bacha. It is not all about the right to vote. Democracy means when people choose their own representative. Okay? It is not just right to vote. हमें डेमोक्रेसी में फ्रीडम टू स्पीच भी मिलता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स आएंगे, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी। लेकिन इसमें मेन जो बात है ना कॉन्स्टिट्यूशन की एक या फिर एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में रहने की, वो ये बात है कि पीपल के पास पावर है बच्चा। देयर इज नो किंग, क्वीन और अ डिक्टेटर। किसके पास पावर है? हु इज द अल्टीमेट पावर होल्डर? द पीपल। दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन रिमूव एनीवन फ्रॉम द power, right? So they have the power. That is democracy. Very excellent question. Now, what do we mean by the term constitution? अभी हम जानते हैं there are several countries, there are many countries, सबके पास अपना अपना संविधान है. So what does the संविधान or the constitution word actually means? Now the constitution is a comprehensive document. एक ये comprehensive document है, एक छोटा comprehensive करके एक document है containing all sets of rules, जिसमें सारे rules लिखे गए हैं that describes the rights and the duties of the citizen, कि हमें क्या अधिकार है as a citizen of India, हमें क्या अधिकार है या citizen of any country, उन्हें क्या अधिकार है अपने country में रहने का, और उनकी क्या duties है, what they must do for the country, right? So constitution एक छोटा comprehensive document है that set up the rule that describes the right and duties of the citizen. जो citizen उसके नागरिक के rights और duties को बताता है, जैसे कि we have 6 fundamental rights and 11 fundamental duties. So ये हमें बताता है. Now other, it also gives us the manner according to which the governance of the India is to be carried out. और ये ना केवल हमें बताता है अपनी rights और duties को, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री को भी बताता है कि उसे किस तरीके से वर्क करना चाहिए. Okay, you are getting me everyone? Now moving ahead. Constitution regulates the position and power of 3 organs of the government. Now, government function करती है 3 अपने organ से. Government 3 अपने organ से function करती है. Now, first is the legislative. पहला कौन है? लेजिस्लेटिव है. द सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज द जुडिशरी. अभी आप लेजिस्लेटिव मतलब
सब जानते हो क्या होता है. Legislative is where the parliament and the legislature स्टेट लेजिस्लेचर हमारा क्या बनाता है, हमारा लेजिस्लेटिव बनाता है. दैट राइट्स डाउन और दैट गिव्स अ सेट ऑफ लॉज, जो लॉज बनाते हैं बच्चा. ठीक है. अब उन लॉज को कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, उन लॉज को लागू कौन करेगा, द एग्जीक्यूटिव. उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें कम्स द प्रेसिडेंट. Okay, the president, the vice president, the prime minister and other councils of ministers. और बाकी सारे councils of ministers भी इसी में आते हैं. So what they do, they enforce the law. ठीक है, वो enforce करेगा. And lastly comes the judiciary, जिसमें कौन है, the supreme court. Understand everyone. इसमें कौन है, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स बच्चा. और कौन है, लोअर कोर्ट्स. ये सारे क्या बनाते हैं, these three things forms the judiciary that will protect the citizens' right, जो हम नागरिक को प्रोटेक्ट करेगा. So you have understood, हमारी गवर्नमेंट इस तीन बॉडी से रूल करती है, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेटिव इज पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो लॉज बनाती है. एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट enforces the law, and the judiciary is the one who protects the rights of the citizen. Understood? There comes the Supreme Court, the High Court and the Lower Court. ठीक है. So the Constitution regulates the position and powers of these three bodies and the states, how they are interrelated. ये क्या करती है, organs of the government और state के बीच में संबंध बनाती है. Organ of the government और states, स्टेट क्या है, जो गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट है, जो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बीच के संबंध को द कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स. ओके, कि किसका क्या पोजीशन होगा, किसको क्या पावर दी जाएगी. Okay, now why the constitution assumes a special importance? इतना संविधान पे फोकस क्यों है? What does this mean? The constitution assumes a special importance as it moderates relation between the government and the governed. ये क्या करती है? एक cordial relation, एक harmony, peaceful relation बनाती है. किसके बीच में? The government, जो सरकार है, और जिसके ऊपर सरकार गवर्न कर रही है, दैट इज द पीपल. उन दोनों के बीच में द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ पीसफुल रिलेशन, अ मॉडरेट, अ पीसफुल रिलेशन. ओके, नाउ इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. ऑफ कोर्स ये क्या करती है, हमारे नागरिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. So you have got कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, इट वाज 26 जनवरी 1950. कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, राइट? वेरी गुड. और इसने इंडिया को क्या बना दिया, इट मेड इंडिया अ डेमोक्रेट, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो रूल्स लिखती है, और जो क्या करती है, किसके लिए रूल्स लिख रही है, जो राइट्स और ड्यूटीज देगी सिटीजन को, और गवर्नमेंट को बताएगी कि किस मैनर में उसे काम करना है. ओके, नाउ ये एक इंटर रिलेटेड रिश्ता बनाती है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के और स्टेट के बीच में. इसके पास स्पेशल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक पीसफुल रिलेशन बनाती है गवर्नमेंट और पीपल, दैट इज द सिटीजन, द गवर्न्ड के बीच में. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन. और ये किसके इंटरेस्ट को बचाती है, हमारे नागरिक के इंटरेस्ट को बचाती है, बाय रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजन. कोई भी वॉयलेंट या अग्रेसिव डिसीजन को लेने से ये उसे रोकती है गवर्नमेंट को. नाउ एम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन इज टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. एक संविधान का क्या मतलब है, व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड और व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. Because the aim of the constitution is to ensure that the government is working smoothly.
गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्मूथ वर्क कर रही है, एंड फॉर द वेलफेयर दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, और वो सिटीजन के हित में ही काम कर रही है। ओके, मूविंग अहेड, the principles of the constitution is to distinguish between the constitutional or democratic government from the absolute monarchy or dictatorship। समझो बच्चों इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, when the power is with the people, power to elect the government is with the people, then it is known as constitutional and democratic government। प्रिंसिपल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएगी और उसको अलग करेगी एब्सोल्यूट मोनार्की से। बच्चा, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है, जब एक के पास सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ओनली वन पर्सन होल्ड्स द एंटायर पावर, और डिक्टेटरशिप जैसे कि हिटलर ने किया था, एब्सोल्यूट मोनार्की था, दैट इज जहां पर किंग का राज है ना, उसके अंडर में सब कुछ है, किंग या क्वीन का। मूविंग अहेड comes the enactment of the Indian Constitution। Indian Constitution का enactment कैसे हुआ? Okay, moving ahead, during the freedom movement, अब सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम स्टोरी की तरह याद रखो, फ्रीडम मूवमेंट में जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आई थी 1946 में, ठीक है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1946 में क्या आई थी, एक साल पहले कैबिनेट मिशन इंडिया में आई थी, ठीक है। उन्होंने अपने कुछ प्रपोजल्स को सामने रखा, दे फॉरवर्डेड अ सेट ऑफ प्रपोजल्स, ओके, टू मीट द डिमांड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ये कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि फ्रीडम फाइटर्स के कुछ डिमांड को सामने में रखा, इट प्रेजेंटेड अ सेट ऑफ प्रपोजल्स, ओके। In this particular thing, one of the proposal was setting up of a constituent assembly। इसी proposal में एक पॉइंट क्या था कि ये लोग अपनी constituent assembly बनाएगी, ओके। सो कैबिनेट मिशन में बहुत सारे proposals आए, उसमें एक पॉइंट था कि ये लोग अपने constituent assembly बनाएंगे, ओके, whose members were indirectly elected by the provincial legislative assembly। जिसके मेंबर्स कहां से इलेक्ट होंगे, लोअर हाउस से ही इलेक्ट होंगे, ओके। नाउ मूविंग ऑन, द इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली कंप्लीटेड इन जुलाई 1946। प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्शन होना कंप्लीट हो गया जुलाई 1946 में। प्रिंसली स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किया, प्रिंसली स्टेट्स लाइक बंगाल, अवध, ये लोग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ये लोगों ने they were represented by the members nominated by the rulers of these states। so princely states क्या कौन थे, जो जिनके पास अभी भी राजा का रूल था, वो लोग प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे, ठीक है। जहां पर नवाब थे, जहां पर जैसे अवध का नवाब है ना, बंगाल का नवाब, तो जहां पे नवाब थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उसके मेंबर्स रूलर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए, इलेक्ट किए गए, नॉमिनेट किए गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 389। समझो बच्चा, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, दैट इज नोन एज अनडिवाइडेड इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पर कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। 292 मेंबर्स उसमें इलेक्ट किए गए थे, 93 मेंबर्स उसमें नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। सेकेंड पॉइंट आप जानते हो, पहला इलेक्ट किए गए थे 292 मेंबर्स, 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किए थे, एंड 3 चीफ कमिश्नर्स थे प्रोविंस के, एंड 1 फ्रॉम द ब्रिटिश, और एक कौन था, एक ब्रिटिश का मेंबर चीफ कमिश्नर था, ओके। सो दिस फॉर्म 389 मेंबर्स। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान अलग होंगे तो मेंबर्स भी जो उसमें हैं, जो पाकिस्तान के एरिया के, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, तो ये मेंबरशिप रिड्यूस हो जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग अहेड वी विल सी
ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was framed by the constituent assembly। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। एंड these were the members of the constituent assembly that we can see in the picture itself। Okay, moving ahead, the formation of the constituent assembly. How was the constituent assembly formed? Okay, now the first sitting of the constituent assembly कब की गई, 9 दिसंबर 1946 में। हमेशा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और इसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है जो क्या करेगी, मीटिंग्स करेगी, वो पूरे संविधान को मिलाएगी, बनाएगी। सो उसमें टाइम लगता है, 4 साल लग गए। सो पहला सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था एट द प्रेजेंट सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। सेंट्रल, अभी के पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है वहीं पर किया गया था। ओके, एंड वाज प्रेसिडेड ओवर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसे प्रेसिड किया था। This person, the oldest sitting member of the Constituent Assembly. Why he presided? Why this person specifically? क्योंकि वो उस टाइम के Constituent Assembly जिसमें 389 members हैं, उसके ये सबसे oldest member थे. So he presided the Constituent Assembly at that meeting. So this is the picture of the entire members of the Constituent Assembly. Okay. Moving ahead, on दिसंबर 11 में 1946 में, अभी आप देखो बच्चा, दिसंबर 9 में ही ये हो रहा है। दिसंबर 9 में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहली मीटिंग की गई थी, है ना। दिसंबर 9 में क्या हुआ था, पहली मीटिंग की गई थी। दिसंबर 11 में राजेंद्र प्रसाद was elected the president of the Constituent Assembly। राजेंद्र प्रसाद को क्या इलेक्ट किया गया, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यू कैन सी राजेंद्र प्रसाद साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मूविंग अहेड, लेकिन when the मुस्लिम लीग जो थी उसने बॉयकॉट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और उन्होंने डिमांड रखा कि they want a separate state, they want a separate nation named Pakistan. So they demanded for a creation of a separate state, the Muslim League, and named it Pakistan. Thus इसके वजह से क्या होगा, the members representing the territory which went to the Pakistan। अब जो इंडिया का पाकिस्तान का एरिया है उसकी जो मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 389 मेंबर्स बनाते थे, वो क्या करेंगे, they withdrew themselves from the constituent assembly, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया था। Therefore, the membership of the constituent assembly was reduced to 299। कितना था पहले, 389। इसमें से ऑलमोस्ट 100 लोगों ने, 90 लोगों ने रिजाइन कर दिया और अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और ये नंबर 299 हो गया, जिसमें से 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे नवंबर 1949 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना सिग्नेचर करके उन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पास किया। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन को बच्चा पास किया। तो अभी देखो, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फिर इसमें 284 मेंबर्स ने साइन करके, लीविंग 15 मेंबर्स कम थे इसमें, राइट। 15 मेंबर्स के अलावा 284 मेंबर्स ने इस पे साइन किया और उन्होंने फाइनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। ओके, इसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यू टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, मूविंग अहेड, बिटवीन दिसंबर 9 जब पहली मीटिंग हुई, दिसंबर 9 1946 में क्या हुआ था, द फर्स्ट मीटिंग से लेकर अगस्त 14 1947 तक असेंबली ने 5 सेशंस होल्ड किए थे। टोटल कितना सेशन ये लोग बैठे थे, कितनी मीटिंग किए थे, 5 मीटिंग किए थे। ओके, नाउ कम्स द
composition of the Constituent Assembly, as who were the members of the Constituent Assembly, किनको ये लोग represent कर रहे थे. Now we find wide-ranging membership of the Constituent Assembly gave representation to all. Now they gave representation to all shades of the public opinion. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके मेंबर्स आप इमेजिन करो कितना 389 मेंबर्स थे पहले और बाद में आके 299 मेंबर्स हो गए. इतने मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया से उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. सो वी हैड अ वाइड रेंज ऑफ मेंबरशिप. Okay, the cabinet mission plan had ensured representation for only 3 categories. कैबिनेट मिशन प्लान ने सिर्फ 3 कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की ही थी, उनके अस्तित्व को मानने की बात कही थी. द जनरल कैटेगरी, द मुस्लिम कैटेगरी एंड द सिख कैटेगरी. सो इन्होंने बस 3 कैटेगरी को रिकॉग्निशन देने की बात करी थी. लेकिन द कांग्रेस लीडर्स ने ये इंश्योर किया कि अदर कम्युनिटीज वर आल्सो गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Now the Congress leader included other communities like Anglo-Indians, Indian Christians, scheduled caste and scheduled tribes. They included all these people and got their representation. याद रखना बच्चा कि कैबिनेट मिशन ने बस 3 कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन कांग्रेस लीडर्स ने बाकियों को भी इंक्लूड किया. द एंग्लो इंडियंस, द इंडियन क्रिश्चियंस, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब. Okay, now the Anglo-Indians were represented by, किसने Anglo-Indians को represent किया? The Frank Anthony and S.H. Prater. इन्होंने Anglo-Indians को represent किया. Indian Christians को represent करते हैं H.C. Mukherjee and Joseph D'Souza. इन्होंने Christians को represent किया. Parsis people were represented by H.P. Modi. Parsis people किसको represent करते हैं? H.P. Modi को represent करते हैं. And though the Muslim League had boycotted the assembly, there were still 2 members. हालांकि मुस्लिम लीग ने असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हमें तब भी मुस्लिम कम्युनिटी के 2 लीडर्स इसमें मिलते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट, जफर इमाम एंड मोहम्मद सदुल्लाह. So ये 2 members हमें मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिलते हैं. So not only the general category, the Muslims and the Sikhs were represented, but we also got Anglo-Indians, Indian Christians, Parsis, scheduled caste, scheduled tribe, and also 2 members from the Muslim community itself. Now the Sikhs were represented. Who represented the Sikhs? Sardar Hukum Singh and Hukum Singh. So these were the people who represented Ujjwal Singh. I'm sorry, this is not Hukum Singh, this is Ujjwal Singh. सरदार हुकुम सिंह और उज्जवल सिंह ने इन्हें रिप्रेजेंट किया. Thus the Constituent Assembly was truly nation in character. So हम ये जरूर कह सकते हैं कि Constituent Assembly पूरे देश को दिखा रही थी. पूरा nation can be seen through this Constituent Assembly, and this showed the diversity of the nation, कि how diverse the Indian nation was. Okay, moving forward, the objective resolution. What is the objective resolution? This was a resolution that was passed by Jawaharlal Nehru. Okay, when the Constituent Assembly started the work of drafting the Constitution, जब Constituent Assembly ने ये काम शुरू किया कि they will draft the Constitution, Pandit Jawaharlal Nehru proposed objective resolution on December 13, 1946. तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने क्या पास किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नामक एक चीज रेजोल्यूशन पास की दिसंबर 13, 1946 में. ये रेजोल्यूशन हाईलाइट करती है ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल गोल्स क्या है. What is the national goal of India and what is the objective of India through the Constitution? Okay, now the free Indian, pehla is what? The free Indian will be nothing a republic. The free Indian, independent India is what? A secular India, a democratic sovereign India is what? A republic. That means that we have representation of the government by the people. Okay,
Now, the ideals of social, political, and economic democracy would be guaranteed to all people. No people will be under nobody. There will be social, political और economic democracy रहेगी और सारे लोगों को ये दी गई. The republics would be granted fundamental rights. बच्चा हमारे पास कितने fundamental rights हैं? 6 fundamental rights हैं. So ये सारे fundamental rights उन्हें दिए गए. Culture and educational rights, the right to practice their own religion, the right to have a secular thought, ये सारे fundamental rights अपने citizens को दिए गए. Moreover, the state would safeguard the rights of the minority and the backward class. And they said, what do we mean by state? The government. The government will do what? They will safeguard the rights of the minority and the backward class. बैकवर्ड क्लास और राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज को ये लोग सेव करेंगे. सो दीज वर द 4 थिंग्स, these were the 4 clause, the 4 objective of the constitution that was projected in the objective resolution. Okay, so today's last topic is the drafting committee. What do we mean by the drafting committee? Now, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, इसने 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट कर दिए, 2 इंडिपेंडेंट नेशन या गवर्नमेंट को क्रिएट कर दिया, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. Okay, now they recognize the existence of the constituent assembly in India. And जब इंडियन ये जो एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसने क्या कर दिया था, 2 नेशन क्रिएट कर दिया था. इट रिकॉग्नाइज्ड, दिस पर्टिकुलर एक्ट रिकॉग्नाइज्ड कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया. ओके, नाउ दिस लीगल सैंक्शन, क्योंकि ये एक्ट ने इसको रिकॉग्नाइज दे दिया था, रिकॉग्निशन दे दिया था, क्योंकि तो क्या हो गया, ये एक लीगल थप्पा पड़ गया इस पे. सो दिस लीगल सैंक्शन enabled the constituent assembly to function after the India's independence. इसके वजह से इसने क्या दे दिया, इसे राइट दे दिया कि they will function even after the India's independence. Okay, the assembly became a sovereign body and therefore the constituent assembly became an independent body. एक free body बन गई, independent body बन गई, जो independence के बाद भी function कर रही थी. और इसमें इस बॉडी ने अपने काम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 कमिटीज बनाई. Okay, one such committee was the drafting committee. उसमें 8 कमिटीज में एक कमिटी क्या थी, 8 कमिटीज में से एक कमिटी was the drafting committee. Yes, and this was under the chairmanship of the B.R. Ambedkar. Now, if you are asked who was the chairman of the drafting committee, so you will write B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Or you are asked that what position did B.R. Ambedkar hold in the framing of the constitution, so you will write he was the chairman of the drafting committee. And this was set up on August 29, 1947. इंडिया की आजादी के तुरंत बाद इसको सेटअप किया गया. Now, was entrusted of the task of drafting the constitution. And what was the work that was given to this committee? कि they will draft our constitution. वो हमारी constitution बनाएंगे, उसको लिखेंगे. Okay, now with this I have come to an end. Thank you so much for being so kind and patient. You have shown your immense support. I'm really thankful to all of you. I will be bringing my next session very soon in the part B of this particular chapter. So stay connected at 5:30 today, 5:30 p.m. today. I will be ending up this session and this will be very useful for you, and soon I will be wrapping up chapter number 2 and 3 as well. So stay connected, stay together for more updates. If you have any suggestion, any queries, anything that you want me to do, आप जैसा भी help मुझसे चाहते हो, आप कोई भी चीजें चाहते हो, जैसे कि मैम आप ये लेकर आओ, आप वो लेकर आओ, आप इसे ऐसे लेकर आओ, या कोई suggestion आप drop करना चाहते हो, you can always do it. Okay, so if you want कि मैं reduce syllabus
आपके लिए लेकर आऊं, उस पे एक सेशन बना दूं. So you tell me, I got this, बच्चा. Any topic that interests you or anything that you want me to come up with, tell me. Okay. Till then, I will sign off now. This was a 30-minute session. The other will be also 30 minutes. So 1 घंटे में आपका एक chapter complete हो रहा है. And go and quickly make your notes. Okay, so that you this chapter will be in your mind fixed. Okay,